बड़े सौभाग्य की बात राजनांदगांव शहर के लिए प्रभु ने प्रसाद रूप में संत समागम 5 दिवसीय सुंदरकांड महोत्सव, वाह! राजनांदगांव के भक्तों के लिए तृतीय दिवस सुश्री वंदना अग्रवाल भरत भाई साधव अहमदाबाद, माँ भगवती की उपासक हमारी वंदना देवी प्रभु का गुणगान करेगी, माँ का गुणगान करेगी, हम सबके साथ लेकर गए। फूल चढ़ा रहे हो, बोल भगवान भगवान बोल भगवान। गणेश जी सामने, गणेश जी सामने। वंदना जी से हम निवेदन करते हैं कि आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। अशोक जी भैया हमारे श्याम के दीवानों के प्रवक्ता और हमारे सब कुछ इस आयोजन को सजाने का कार्य करते हैं हमारे अशोक जी लोहिया। मैं मन चुन के हाथ में देता हूँ ताकि वो आए हुए मेहमानों का हम सब परिचय कराए और सुंदर भजनों से हम सबको जुड़वाए। बोलिए जलाराम बापा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्याम के दीवानों एवं हनुमान भक्तों के द्वारा संवत 2072 वर्ष 2015 के आषाढ़ मास के पावन पुरुषोत्तम मास में रायपुर नाका वाले बालाजी की प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे इस संस्कारधानी नगरी के आदरणीय गणेश मिश्रा जी को ये प्रेरणा हुई कि जन जन के बीच में हनुमान पहुँचे। अभी हम 2 दिवस से यहाँ पर हनुमत कथा और हनुमान जी कौन हैं इसकी विवेचना सुन रहे हैं। आदरणीय पंडित अजय याग्निक जी एवं रसराज जी महाराज ने जीवन प्रबंधन के गुरु बताते हुए एक एक व्याख्या, एक एक बिंदु पर हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड की व्याख्या की है। तो ऐसे हनुमान जी का चरित्र, जीवन चरित्र एक एक व्यक्ति के जीवन में पहुँचे, ऐसी प्रेरणा गणेश जी मिश्रा के हृदय में हुई और ये जागरण हुआ। और तब 2015 वर्ष संवत 2072 से यह क्रम चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। प्रेरणा ऐसी चलती गई। कोई कल्पना नहीं थी कि हम 10वीं माला तक पहुँच जाएंगे। एक माला पूरी करने का संकल्प उन्होंने लिया था। प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के पश्चात मंगल, शनि और रवि को तो अनिवार्यता कार्यक्रम होते ही रहने लगे। उसके अलावा भी अन्य दिवसों में जब भी किसी परिवार में कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, बच्चे का जन्मदिन है, परिवार में किसी सदस्य का जन्म दिवस है, उस दिवस में भी अपने जीवन के कार्य क्षेत्र को एक निजी कार्य
क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए भी इस ऐसी सेवा को, प्रभु की सेवा में लगना और अनवरत रूप से 5 वर्षों में 10वीं माला को पूर्ण करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अभिनंदनीय है। यह एक मतलब प्रभु की कृपा ही है। बिना प्रभु की कृपा से यह संभव नहीं है कि अपने परिवार के साथ साथ परिवार में सुख आए दुख आए तो भी यह क्रम चलता रहा। आज परिवार को साथ में, समाज को लेकर चलना, विभिन्न क्षेत्रों में कोई परिवार में रिश्तेदारी में विवाह कार्य है, कोई कमी है, उसको भी संभालते हुए सारे कार्य को पूर्ण करने का जो कार्य गणेश जी ने, श्याम के दीवानों ने और हनुमान भक्तों ने किया है वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। यह सब प्रभु की कृपा है। अभी हम इस 10वीं माला में कल जो है पूर्णता प्राप्त करेंगे 10वीं माला को। आज इस 5 दिवसीय संत समागम का 3य दिवस है और हमारे समक्ष आसन पर बहन सुश्री वंदना अग्रवाल जी, आप इंदौर से पधारी हैं और प्रभु श्याम की दीवानी हैं। हम माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर है। आपके सुमधुर भजनों की अमृत गंगा में हम सभी स्नान गोताक लगाएंगे और इसके पश्चात आज ही अहमदाबाद गुजरात से पधारे हुए हमारे आदरणीय भरत भाई साधु जी का भी आगमन कल से ही हो चुका है। उनके द्वारा भी सुमधुर सुंदर कांड पाठ की विवेचना की जाएगी, यहाँ पर पाठ किया जाएगा। कल हम सभी यहाँ पर श्याम के दीवानों के प्रमुख आदरणीय गणेश जी व्यासपीठ पर विराजेंगे और उनके साथ राजेश जी, श्याम के दीवाने के भगत, श्याम के दीवानों के पिता राजेश जी और श्याम के दीवाने और हनुमान भक्तों की टोली जो है मंच पर विराजेगी और हम 1080वें यानी 10वें माला को पूर्णता प्राप्त करेंगे और कल के पश्चात यह क्रम अनवरत जारी रहेगा जब तक प्रभु की कृपा और इच्छा होगी। यह प्रार्थना हम प्रभु से करेंगे, हनुमान जी से, कि यह क्रम चलता रहे। मैं वंदना अग्रवाल जी के अभिनंदन स्वागत के लिए मैं मंगला जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। रायपुर से आप पधारी हैं। आप जो हैं वंदना जी का अभिनंदन स्वागत कर इस श्याम के दीवाने परिवार की ओर से अभिनंदन करें। संस्कार धानी नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कल का जो दिवस होगा वह बहुत अविस्मरणीय होगा। 108 माला की पूर्णता जो है 108 जोड़ों के साथ यहाँ पर कल उपस्थित होंगे। प्रत्यक्ष रूप से 108 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 108वीं माला पूर्ण होगी श्याम के दीवानों की। और मंगला जी भी प्रत्येक वर्ष 108 जो माला की जो पूर्णता होती है उसमें प्रतिवर्ष बैठ रही हैं। यह बहुत अभिनंदनीय है। मैं उनका संस्कार धानी नगरी परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजेंद्र अग्रवाल जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वे वंदना जी को शाल उड़ा करके अभिनंदन स्वागत करें। आप भी माँ जीवन भवानी के परम भक्त एवं श्याम प्रभु के भक्त हैं। ये भी हर माला के 108वीं माला में परिवार के साथ जोड़ों के साथ बैठते हैं। आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम सीधे कार्यक्रम से जुड़ते हैं विलंब नहीं करते हुए, क्योंकि 2 दिवस से हम देख रहे हैं कि गणेश जी चाहते हैं कि 12 बजे तक कार्यक्रम पूर्ण हो जाए, किंतु कार्यक्रम जब बैठते हैं
तो प्रभु की ऐसी इच्छा है, सामने भगवान राम का दरबार सजा है। मैं सीताराम भगवान एवं राम पंचायत भगवान लक्ष्मण जी, राम जानकी जी और हनुमान जी महाराज के साथ ही जलाराम बापा के चरणों में नमन करते हुए वंदना जी को मंच सौंपता हूँ। आग्रह करता हूँ कि वे अपनी सुमधुर वाणी से अमृत गंगा प्रवाहित करें। हेलो हेलो। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी जिसकी बदौलत ये सम्मान, जिसकी अधिकारी मैं नहीं हूँ। शाम के दीवाने इतने मशहूर हो गए हैं, शायद भगवान का दरबार भी जब सुनता होगा तो वो भी नतमस्तक होता होगा एक बार। इतनी मशहूर शाम की दीवाने की टोली हो गई है कि मेरे को इंदौर से यहाँ खींच के ले आती है बरबस बार बार। और ये जो गणेश भैया का प्रेम है, इसने तो एक ऐसी बेला में बांध दिया है कि जब जब शाम के दीवाने का नाम आएगा तो वो वहाँ मेरा नाम अपने आप जुड़ जाएगा। बहुत मेरा परम सौभाग्य है कि आज फिर से 3 वर्ष बाद, 3-4 साल बाद में फिर से मंगल पाठ के बाद मुझे भैया ने ये अवसर प्रदान किया। बापा का मंदिर और शाम के दीवानों के साथ में भी भजन, एक पुष्प मैं भी अपना अर्पण यहाँ पे इतने बड़े आयोजन में करूँगी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ज़्यादा सत्संग वगैरह मेरे को नहीं आता, बस जो भगवान ने जो थोड़ा सा वाणी दी है, बचपन से भजनों का साथ रहा, वही कुछ जो अंदर से निकलेगा। कुछ लाइनें लिखी भी है मैंने नई, जो भी कुछ अंदर से निकलेगा वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही, अभी मेरे 6 महीने पहले ही मेरे पिता और माता दोनों का देहांत हुआ। 6-8 महीने के अंदर दोनों छोड़ के गए, तो उसके चलते मैं अभी पहली बार अपना जो भी कुछ कहना है भजनों के जरिए भगवान से मांगूंगी, बोलूंगी और वो निकालूंगी अपना दुख बाहर। वो मेरे साथ हैं, हमेशा साथ हैं, और मेरा जीवन भजन ही है। और आज अगर वक्त मिला तो कोई एक ऐसा अनुभव अपने जीवन का सच्चा कि भजन क्या है और जीवन क्या है, जो मेरे साथ हुआ है मेरे जीवन में, अगर वापस समय देंगे तो मैं वो जरूर कहना आप लोगों से चाहूँगी, अगर समय मिला तो। इसके पहले हम अर्जी लगाते हैं, अरदास करते हैं गणेश जी की। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। मम
तुम्हारा प्रथम हमारे पूज्य हुई सब करते नाथ तुम्हारा नमन करो स्वीकार गणराज हमारा गणराज बोले नमन करो स्वीकार गणराज हमारा गणराज हमारा बोलिए गणराज महाराज की जय हो। पिता तुम्हारे शंकर भोले एवं शिव शंकर पिता तुम्हारे शंकर भोले एवं शिव शंकर संग गौर जामैया रूप मनोहर सुंदर संग गौर जामैया रूप मनोहर आज तुम्हारा कीर्तन में हर परिवार तुम्हारा आज पधारो कीर्तन में हर परिवार तुम्हारा तुम करो स्वीकार गणराज हमारा गणराज हमारा तुम करो स्वीकार गणराज हमारा गणराज अखिल कहीं भी दिख रहे थे अखिल भैया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान आटू वाले श्याम की और वृंदावन धाम की आटू वाले श्याम की और वृंदावन धाम की साथ में हो चल राम कथा का साथ में हो चल राम कथा का लोके जय जयकार तुम करो स्वीकार हे गणराज हमारा गणराज हमारा तुम करो स्वीकार हे गणराज हमारा गणराज हमारा
श्याम प्यारे की जय। अब मेरी माँ आराध्या जगदम्बा भवानी का एक भजन लेती हूँ, सब लोग साथ दीजिएगा। साची जोतो वाली
माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय बोली जगदम्बे मात की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आपके लिए बैठी वरुण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिते सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत लखन बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल मोचन के। आदित्य लक्ष्मण गुंजा विराजे काने मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसि। राम लखन सीता सहित सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हनुमत कीर्ति मौज बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत। सब कर तुम रोज सियावे असकल सिर पर गट में लगावे। संसार ब्रह्मांड पुरी सारे नारद सहित जहाँ से कभी को मिल गई सके गुण। तुम उपकार सूझी वैसे राम मिलाए राजपद देना। तुम रोमन भीषण माता लंकेश्वर भय सब जग व्यापा। तुम सहस्र दर्पण मानो अंतकाल रघुवर पुर जाय। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सोए हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर सोई झूठे पंथ पागल होय। यह पढ़ि हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी साई। सीता सतबार तेरा कीजे नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरण
अरे छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। आवाज आनी चाहिए, सब खाना करके आए हैं, वैसे मुझे पता है। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया भक्त हनुमान की पावन घुंघरू बांध के नाचे, हाथों में गंजनी बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा महावीर हनुमान का, लगता है पैरा महावीर हनुमान का, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
आप भी दे रखे हो। मेरे कान्हा जिसे तेरा दीदार हो जाए, मेरे श्यामा जिसे तेरा दीदार हो जाए, उसकी उजड़ी हुई दुनिया गुलजार हो जाए, मेरे कान्हा तेरा दीदार हो जाए, मेरे कान्हा जिसे तेरा दीदार हो जाए, उसकी उजड़ी हुई दुनिया गुलजार हो जाए, मेरे कान्हा जिसे तेरा मुसीबत हो या गर्विश हो या आंधी हो या तूफान, मुसीबत हो या गर्विश हो या आंधी हो या तूफान, लगा ले ध्यान जो तेरा तो मेरा पार हो जाए, मेरे कान्हा तेरा दीदार हो जाए, मेरे कान्हा तेरा ये अरमान ये चेतन तेरे दरबार में आया, ये अरमान ये चेतन तेरे दरबार में आया, करम मुझे पर भी थोड़ा सा मेरे सरकार हो जाए, मेरे कान्हा तेरा दीदार हो जाए, मेरे कान्हा तेरा दीदार हो जाए, उसकी उजड़ी हुई दुनिया गुलजार हो जाए, मेरे कान्हा
खाटू नरेश की बोले राम रघुवर सिया जानकी की जय। तुम्हाने यादरली सतावे रे कठे रवे मारो खाटू लो मन पतो बतावे रे नाने यादरली सतावे रे कठे रवे मारो खाटू लो मन पतो बतावे तुम्हाने पतो बतावे रे तुम्हाने पतो बतावे तुम्हाने यादरली सतावे इसकी स्पीच बतानी है वही बोलेगा वरना और कोई भी नहीं बोलेगा। गाड़ी का जाऊं मथुरा जाऊं कटेरी टिकट कटाऊं गाड़ी का जाऊं मथुरा जाऊं कटेरी टिकट कटाऊं अरे ऐसी कोई नहीं बताओ जल्दी जल्दी बताओ ऐसी कोई नहीं बताओ जल्दी जल्दी बताओ श्याम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अभिनंदन स्वागत है वंदना जी का हमारे बीच सुमधुर में। भजनों के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर आपने प्रस्तुत की। श्याम के दीवाने परिवार एवं संस्कारधारी नगरी की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप इंदौर से पधारी हैं श्याम परिवार। अभी प्रथम दिवस से ही आपका यहाँ पर आगमन हो चुका है। 2 दिवस की कथा सुंदरकांड का पाठ आपने श्रवण किया है और पूरे 5 दिन के लिए आप यहाँ पर जो है श्याम के दीवानों के कार्यक्रम में पधारी हैं। आपका अभिनंदन स्वागत है। बड़े ही हर्ष की बात है कि श्याम के दीवाने एवं हनुमान भक्तों के द्वारा
पिछले 5 वर्षों से संवत 2072 से प्रारंभ श्री सुंदरकांड पाठ के 10वीं माला पूर्णता प्राप्त कर रही है। इसी उपलक्ष्य में पंचदिवसीय संत समागम एवं सुंदरकांड पाठ के साथ ही श्री श्याम भजनोत्सव का कार्यक्रम 28 जनवरी से प्रारंभ है। आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम दिवस पंडित अजय याग्निक जी एवं द्वितीय दिवस रसराज जी महाराज के द्वारा यहाँ पर सुमधुर सुंदरकांड की पाठ की विवेचना एवं रसपान कराया गया। आज अहमदाबाद के भरत भाई साधु जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप परम श्याम भक्त, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं और इस नगरी में आपका संस्कारधारी नगरी की ओर से मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्याम के दीवाने परिवार आपको जो है अभिनंदित करता है, वंदन करता है। मैं पंडित मनोज शुक्ला जी एवं आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पधारें और आदरणीय भरत जी का स्वागत अभिनंदन कर पोथी पूजन करें। योगेश कोटक जी एवं संतोष पिल्ले जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पधारें और स्वागत अभिनंदन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। योगेश कोटक जी एवं संतोष पिल्ले जी सादर आमंत्रित हैं। रायपुर नाका वाले बालाजी की कृपा से संवत 2072 आषाढ़ मास के पावन पुरुषोत्तम मास में श्री गणेश जी मिश्रा के हृदय में यह जागरण हुआ कि जन जन के बीच में श्री हनुमान की भक्ति पहुंचनी चाहिए। सप्ताह के 3 दिन शनि रवि और मंगल को के अलावा भी जो है प्रतिदिन जिस दिन भक्त चाहे उस दिन इन्होंने अनवरत रूप से श्री सुंदरकांड पाठ की सेवा प्रारंभ की है। पंडित मनोज शुक्ला जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पधारें और साधु जी को श्री राम नाम दुपटा गाकर अभिनंदन स्वागत करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री जलाराम राम मंदिर की इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं विलंब न करते हुए सीधे हम भरत भाई को मैं मंच सौंपता हूँ कि वे अपनी सुमधुर वाणी से यहाँ पर अमृत गंगा प्रवाहित करें, जिसमें का स्नान करके हम सभी जो है इस पुण्य को प्राप्त कर सकें। इस पंच दिवसीय आयोजन में आपका अभिनंदन स्वागत है। आपको उधर बैकिंग मिलता है बराबर, बैकिंग बराबर मिलता है क्योंकि आवाज़ आपको कम रख पाऊंगा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारा ही फायदा है।
ईश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। आइए हनुमंत विराजिए सुंदरकांड हरहु मति प्रेम सहित गाली पधारिए पवन लोकाभेराम रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् करुणारूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोरमं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रियं शरणं
नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री बलराम बापा श्री रणछोड़दास जी महाराज की श्री हरिचरणदास जी महाराज की श्री पाताल भैरवी मात की श्री अम्बे मात की श्री सद्गुरुदेव श्री खाटू नरेश महाराज की नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम
रामचंद्र भगवान
मिश्रा जी, उनके मित्र परिवार, मंदिर के ट्रस्ट प्रमुख, ट्रस्ट गण और अगल बगल में से पधारे हुए सभी सुंदरकांड प्रेमियों को सुंदरकांड पाठ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माता दी। 3 दिन से लगातार सुंदरकांड पाठ की कथा अच्छे अच्छे विद्वान वक्ताओं से हो रही है और श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं तो ये प्रोग्राम है, ये कथा है और जमती है। कथा 2 दिन से आप लोगों ने समझ ली है। सुंदरकांड में क्या आता है तो आप सभी को मालूम है और सालों से यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, इसलिए आप सब लोग बहुत उपासना भी करते हैं। इसलिए मैं आज सुंदरकांड की कोई चर्चा करने वाला नहीं हूँ, कथा करने वाला नहीं हूँ। बस हम सब मिलके अनुष्ठान के रूप में हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलके सुंदरकांड गाना है। संत और शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना क्या है, जल्दी खुश करने का है तो 2-5 चौपाइया रामचरितमानस की उनको भाव से गाकर सुनाओ तो हनुमान जी महाराज जल्दी खुश हो जाते हैं। और संतो ऐसा भी कहते हैं कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने संगीतज्ञ हो गए उसमें सबसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ जो कोई हो तो हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज को भाव से सुंदरकांड गा के हम सुनाते हैं। मेरे ख्याल से मिश्रा जी 3 दिन तो पाठ उनका होता ही है, शनि, रवि और मंगल। तो पुस्तक पूर्ते प्रमाण में उपलब्ध होंगे तो मेरी विनती है कि सभी को पुस्तक बांट दीजिए और शायद लेके नहीं बैठे हैं उनको कंठस्थ होगा ऐसा भी मैं मानता हूँ, क्योंकि इतने साल से यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो कोई भी ग्रंथ का पठन करने से पहले वक्ता उनकी मति अनुसार उनका महात्मा कहते हैं। तो 2 लाइन में, 2 लिटी में मैं उनका महात्मा आपको बता दूं। सुंदरकांड करने से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, क्योंकि आजकल कोई भी धर्म कार्य में करने से पहले फायदा पहले ढूंढते हैं कि फायदा क्या हो। तो सुंदरकांड करने से भौतिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इससे बड़ा फायदा ये है, आध्यात्मिक फायदा ये है कि सुंदरकांड करने से हमारा घर का वातावरण जो है वो सुंदर बन जाता है, हमारा मन का विचार जो है वो सुंदर बन जाता है। क्योंकि आजकल हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा विचार बहुत बिगड़ा हुआ है और उनको सुधारने के लिए कितना भी रुपया हो हमारे पास, कितनी धन संपत्ति हो, वैज्ञानिक के पास जाके या डॉक्टर के पास जाके उनको बताइए कि इतना पैसा ले लो लेकिन हमारा विचार सुधार दो, हमारा मन सुधार दो, तो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो ऐसा ग्रंथ का आश्रय करना बहुत जरूरी है और सुंदरकांड उनका नाम ही सुंदर है। तो सुंदरकांड का आश्रय करने से हमारा मन पवित्र होता है, सुंदर बनता है, हमारा घर का वातावरण सुंदर बनता है। इसलिए आजकल संत लोग, ऐसे हमारे मिश्रा जी जैसे भक्त लोग सुंदरकांड का प्रचार प्रसार करने में लगा है।
तो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भाव और श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ हम सब मिलकर करते हैं। मैं एक चौपाई बोलूं तो उनके बाद जो चौपाई आती है वो आप सभी को उठाना है। कभी एक साथ 2 चौपाई बोलूं तो उनके बाद 2 चौपाई एक साथ आपको उठाना है। ऐसे करके 1.25 या 2 घंटे में ये पाठ पूरा करेंगे। हमारे अहमदाबाद में तो 1.5 घंटे में वो पाठ पूरा कर देते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल इतना ज़बरदस्त है। मिश्रा जी ने तो, हमारे योगेश भाई ने और यहाँ के परिवार वाले ने बताया कि भरत भाई आपकी जितनी ताकत वो खींच सकते हैं, लेकिन मेरी ताकत ज़्यादा नहीं है। मैं 2.5 घंटे में मेरा कार्यक्रम पूरा कर दूंगा। प्रवचन करने वाला हूँ नहीं। हमारे गुजरात में ऐसी एक कहावत है कि बाबा बना है तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। जो साधु बन जाते हैं, भेंट लेते हैं, तो हमारे गुजरात वाले जो भेंट लेके साधु बनते हैं तो हिंदी तो बोल नहीं पाते बराबर। तो फिर वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबा बना है तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा। तो मेरी हिंदी बराबर है नहीं, लेकिन आज मैंने थोड़ी कोशिश कर ली आपके सामने। गुजरात का हूँ, ज़्यादातर गुजराती ही बोलता हूँ और पाठ देख देख के गाता हूँ, तो हिंदी बोलने की आवश्यकता हुई नहीं है। तो आज इतना बोल लिया। बाबा हिंदी लगा हो तो क्षमा करना। तो आइए भाव और श्रद्धा से सुंदरकांड का पठन करते हैं। दोहा जहाँ जहाँ आएगा वहाँ विश्व प्रसिद्ध चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शन अजिर बिहारी। ये चौपाई का संपुट लगा के हम पाठ में आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आप लोगों को मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को चेहरा में देखूंगा कि मेरे से कितना कंटाल गए हैं, कितनी मजा आती है, क्या नहीं। बाद में 2 भजन करूं, 3 भजन करूं, वो मेरी स्वतंत्रता है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ। इसलिए तो आप सभी को मेरी विनती है, हो सके तो फरमाइश न करें, क्योंकि आप फरमाइश करें और मैं वो नहीं गा पाऊँ तो आपको दुख लगेगा। इसलिए मैं मेरी मस्ती में, मेरे सरस्वती माँ की जो हमारे पर कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो मति अनुसार मैं स्वतंत्र रहकर 2-4 भजन करूँगा, लेकिन माहौल देख के। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। आप सभी का पाठ में स्वागत है। मंगल भवन
गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमर्घं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणिशैलमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यमहरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्तिहा रघुपते हृदयेश्वरीये सत्यं वदमिच भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराङ्गे अकुलित बलधाम है शैलादेह दंडवंकृशानं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुदेवं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभवन अमंगलहारी रघुकुशल चरत
जहाँ गई सकल सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मारही से मंगल भानु अमंगल जो रामचरितमानस नौ रस उसमें भरा है तुलसीदास जी ने, और प्रसंगोपात उसमें जो राग मिलाया जाए
तो उनकी मजा बहुत अमेरी मजा है। जब करुण वाला प्रसंग है वहाँ शिवरंजनी गाया जाता है, वहाँ बागेश्वरी गाया जाता है, और शौर्य में मालकुंस गाया जाता है। ऐसे जो प्रसंग है उनके अनुरूप जो राग गाया जाता है उसका माहौल कुछ अलग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ करुण प्रसंग है तो बाबा जी ने लिखा, त्रिजटासनी बोली माधुपति संगिनी सीता जी त्रिजटा को अपनी संगिनी बताते हुए आगे कहते हैं, क्या क्या मांग करती है त्रिजटा के पास मां जानकी? तजो देह दुसह गिरहु अबे नहीं सही आने आँख रख सत्य
Thank you.
Hare
Bye.
हनुमान जी महाराज दुख की व्याख्या करते हैं। अपने संसार में आए हैं तो छोटे बड़े संकट तो आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन इसका बड़ा रूप देके हम आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। अपने देखते हैं टीवी में, अखबारों में कि सप्ताह में 1, 2, 3 तो आत्महत्या का बनाव होता है। क्यों? क्योंकि ये रामचरित मानस का आश्रय नहीं किया है, सुंदरकांड का आश्रय नहीं किया है। इसलिए बहू और सास में झगड़ा हो जाता है तो बहू आत्महत्या कर लेती है। व्यापारी को व्यापार में थोड़ी खोट आ जाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में नापास होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि ये ग्रंथ से हम विमुख होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ऐसे सत्संग में ऐसे ग्रंथ का आश्रय जो करते रहे तो मेरी विचार दृष्टि से मैं कहता हूँ कि ये बनाव कम होता जा रहे हैं। और इसलिए तो ये संत लोग मिश्रा जी जैसे सुंदरकांड का प्रचार प्रसार में लगे हैं कि ये कम होवे। तो दुख की व्याख्या हनुमान जी महाराज ने की है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे राघव सरकार, ये दुनिया में, ये जगत में सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? तो दूसरी लाइन लिखी है, उसमें उनका जवाब लिखा है, जब तव सुमिरन भजन न हो। ये दुख बड़ा है, अपने से भगवान का नाम स्मरण चुक जावे, भक्ति नहीं कर पावे, वो सबसे बड़ा दुख है। जब जीवन में कोई छोटा बड़ा संकट आवे, दुख आवे, तो ऐसी चौपाई का स्मरण करते रहे
तो मैं मानता हूँ हनुमान जी महाराज चौकस खुद नहीं आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हनुमान जी महाराज हमको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। इसलिए ऐसी चौपाई जब संकट पड़े तब ऐसी चौपाई का स्मरण चालू कर देवे तो मैं मानता हूँ कि दुख कम तो होगा। ऐसी एक ग्रंथ में ताकत है। मेरा निज अनुभव ऐसा है, ऐसे तो 4-5 अनुभव मेरे को हुआ है रामचरितमानस का आश्रय करता हूँ तब से। तो एकदम लास्ट वाला ताज़ा अनुभव जिसको मैं बोलता हूँ, मेरे पिताजी बीमार थे तो वो इतना पीड़ा भुगत रहे थे कि अपने को दिखा नहीं जाता था। तो एक किष्किंधा कांड में दोहा है, रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जाने ना। ये दोहा कोई भी पीड़ित व्यक्ति है और शरीर छोड़ने के लिए सहन तो कर नहीं पाते हैं और खटिया भी छोड़ नहीं पाते, तो इसके लिए ये जो दोहा स्मरण करते करते वो जो शरीर है उनके पे हाथ घुमाते घुमाते जो ये करते रहे तो उनका जल्दी छुटकारा हो जाता है। वो मेरा निज अनुभव है। 2 दिन में मैंने 2 दिन वो जाप किया और पिताजी स्वर्गवास हुए। तो इसमें बहुत ताकत है, लेकिन अपने को इसमें श्रद्धा नहीं है, करने के खातिर करते हैं। लेकिन एक बार जो श्रद्धा से सुंदरकांड का आश्रय करे, रामचरितमानस का आश्रय करे, तो एक एक जो चौपाई है वो महामंत्र है और शिव जी ने उसको प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है। तो इसलिए यहाँ दुख जब जीवन में आवे तो ऐसी चौपाई का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, कह हनुमान भवानी
सुना
सन बोला वचन का मोही माता मतियन रोचन कहो भुवनेश्वर कालू कर प्रभु 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 सुने कहीं पान को चलता मंगल भवन अमंगल हारी चलते बिहारी
संतों को प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण तद जाऊंगे जन खोरी मंगल भवन अमंगल है श्री राम शरणम श्री राम शरण आयो सब लगन श्री राम शरण कल्याण मिल गया श्री राम श्री राम शरण श्री राम शरण संग धर लाए श्री राम शरण श्री राम शरण विलोपिनो श्री राम शरण आयो सकल सिंधु श्री राम शरण जाना कोल पुरोहित से श्री राम शरण समाचार सुनाई सुनाई श्री राम शरण श्री राम शरण
महाराजी भोगत वेद सरित भोगनी हीरा
धानी 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 श्रवण सुजस सुनि मोरे हसी नरी कुदर के बन बहुत चकित चित तोर मंगल भवन मंगल हारी प्रेत सीतारा जब सो दशरथ हानि हानि जय जय सीता जय सीता
जय जय श्री बधिमुख के हरि निसर्ग सर्ग रामवंत बलरासे मंगल भवन मंगल
जिसको कंठस्थ है। और हमारा गुजरात का गरबा बहुत फेमस है। यहाँ होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन नहीं होता है तो हम अभी इधर करवाते हैं। तो जिसको खेलने की इच्छा हो, या ग्राउंड खाली पड़ा है तो उसको भर दीजिए। और 2-3 दोहा जो है वो हम गुजरात के गरबे गाते हैं। मंगल हमारे गुजराती में कहते हैं ए हालो हालो हालो, पधारो पधारो, ग्राउंड खाली है। जिसको कंठस्थ है सुंदरकांड वो खड़े हो जाइए। तो जिसको पाठ पूरा करने का है वो कर सकते हैं पूरा भी, लेकिन कंठस्थ है वो भगवान के सामने नाचने में शर्म नहीं आती, नहीं लगानी चाहिए।
पाताल भैरवी माँ दोहा नंबर 55। दोहा नंबर 55। सहज सूर कपि भाव सभी पुनि श्री पर प्रभु राम जीत सकहि संग्राम मंगल भवन मंगल सचिव बोले राज बचावन रामदेव
चुराई रह दो भूमि पता भूमि 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 समझो मंगल भवन मंगल
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम आज कबीर सुनो गाने कई
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया के राम सिया के राम सिया के राम जय सिया राम जय सिया राम जय बजरंगी जय पार्वती जय मारुति आप बताए हनुमान जी का नाम से हो जय रो कड़िया कड़िया जय राम कड़िया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो बोलो मारा वाला बोलो जय सिया राम 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 जय गुरुदेव राम सिया के 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 राम सिया के
हनुमान जी महाराज ना चरणों में समर्पित करिए, राघव सरकार ना चरणों में समर्पित करिए, जलाराम पापा ना चरणों में समर्पित करिए, गुरुदेव श्री रणछोड़दास बाबू ना चरणों में समर्पित करी અને વળી પાછા યોગેશભાઈ ફરમાઈશ કરી રહ્યા છે કે ગરબા કરવા છે, પણ થોડુંક મારી રીતે બીજી પણ મોજ તમને કરાવી દઉં, કારણ કે હું ગુજરાતી બોલવા માંગુ તમને હું ગુજરાતમાં બેઠો એવું મને તમે આખો માહોલ ઊભો કરી દીધો, ગુજરાત મને યાદ કરાવી દીધું, જય હો જય હો। तो संगीत क्या चीज है, अभी आपने इसका एहसास किया तो कितने तरबतर हो गए आप सब हैं। तो संगीत का महात्मा मैं बताता हूँ क्या संगीत चीज है। प्यार सब खड़े होते हैं तो पूरा करने का इशारा है, तो बस 10 मिनट में मैं थोड़ा मंदबुद्धि वाला आदमी हूँ, क्योंकि ये विक्षेप जो होता है मेरे को नहीं जचता है। आपको ज़्यादा कोई नहीं कामकाज नहीं है तो बैठिए, 10-15 मिनट आगे चलाऊंगा, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। संगीत महात्मा क्या है, प्यार नहीं है ईश्वर से जिनको, ईश्वर में जिसको प्यार नहीं है वो कवि क्या कहते हैं, वो मूर्ख आदमी को क्या बना देता है। दुनिया में जो संगीत नहीं होता तो क्या होता, जग में क्या होता, कोई किसी का
कमले वाले सजी है, कमले वाले के महफिल सजी है, सरकार की महफिल सजी है, सरकार की महफिल सजी है, मेरे मन का झूमर सजा, मेरे मन का झूमर सजा। हमारी महफिल में बैठ कर देखो तो पता लगेगा कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा
आपको कुछ होता नहीं है? गोपी को नचाते, गोपी को नचाते, गोपी को नचाते। आप लोग थक गए ऐसा लगता है। गोपी को नचाते
मचाते हुए मचाते रामदेव श्री रामचंद्र भगवान मिश्रा जी की और थोड़ी इच्छा लगती है इसलिए नजदीक आ गई। क्या है मिश्रा जी? गरबा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बस 2 मिनट के बाद है ना। आइए हमारे अशोक भैया 2 मिनट आप सबको कल यहाँ पर जो ये उत्सव हो रहा है और किस कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, हनुमान जी कृपा हम सब पे कैसे हुई, आओ पूरी जानकारी लेते हैं हमारे श्याम के दीवानों के हमारे प्रवक्ता हमारे अशोक जी लोहिया से, है ना। जय श्री श्याम। इस संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में संवत 2072 वर्ष 2015 के आषाढ़ मास पावन पुरुषोत्तम मास के दौरान श्री सत्यनारायण मंदिर के द्वारा 15 दिवसीय प्रथम पक्ष में महोत्सव का आयोजन किया गया। उसी दौरान रायपुर नाका वाले बालाजी की विशेष कृपा एवं आशीर्वाद श्री गणेश मिश्रा जी के हृदय में जागृत हुई और उनके हृदय में यह भाव का जागरण हुआ कि जन जन के हृदय में हनुमान जी की भक्ति का जागरण होना चाहिए। और वर्ष 2015 के उस आषाढ़ मास के द्वितीय पक्ष से श्री सुंदरकांड पाठ करने का संकल्प उन्होंने रायपुर नाका वाले बालाजी के समक्ष उठाया। मंदिर में बाबा श्याम के दरबार भी वहाँ पर सजा, बाबा बैठे हैं वहाँ श्याम, और हम यहाँ अभी राम के दरबार में जो है उस 2015 से प्रारंभ सुंदरकांड की यात्रा अनवरत रूप से सप्ताह में 3 दिवस अनिवार्य एवं अन्य दिवसों में भी करते हुए 1079 सुंदरकांड के पाठ देश के लगभग सभी प्रांतों में संपन्न हो चुके हैं। 10वीं माला की पूर्णता प्राप्त करने के ध्येय को लेकर यह विचार श्याम के दीवानों एवं हनुमान भक्तों के हृदय में जागृत हुआ कि क्यों न 5 दिवसीय महोत्सव के रूप में इस 10वीं माला को पूर्णता प्रदान की जाए और 28 जनवरी से 1 फरवरी तक के
इस पंच दिवस में श्री जलाराम राम मंदिर के इस प्रांगण में महोत्सव श्री सुंदरकांड का पाठ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 28 तारीख को विश्व प्रसिद्ध श्री सुंदरकांड के पाठ एवं हनुमत जागरण करने वाले पंडित अजय याग्निक जी के द्वारा सुमधुर सुंदरकांड पाठ का गायन की अमृत गंगा यहाँ प्रवाहित की गई। 29 जनवरी को दिल्ली के ही पंडित रसराज जी महाराज ने हनुमान जी के चरित्र का विशिष्ट बखान करते हुए मानस के विभिन्न चौपाइयों को यहाँ पर उद्धृत करते हुए हनुमान जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको प्रतिपादित किया। और आज हम तृतीय दिवस में का प्रारंभ इंदौर से पधारी बहन वंदना अग्रवाल जी के द्वारा माँ भवानी एवं श्याम हनुमान के भजनों से आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात अहमदाबाद गुजरात से पधारे श्री भरत भाई साधु जी एवं उनके सहयोगी संगीत साथियों के द्वारा सुमधुर सुंदरकांड पाठ का विस्तृत जो है यहाँ पर विवेचन पाठ किया गया। बहुत ही मधुर वाणी में उनके द्वारा जो संगीत की साधना के साथ आज यह पाठ हुआ, बहुत ही मनोरम पाठ हुआ है। श्री श्याम के दीवाने परिवार एवं हनुमान भक्तों की ओर से मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सत वंदन करता हूँ। यह श्रृंखला अब कल चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेगी। कल 1080वां श्री सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। कल सुबह 9:30 बजे से श्री हनुमान जी का अभिषेक पूजन और उसके पश्चात हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 12:15 बजे 108 ब्राह्मण आचार्यों का भोज के साथ सभी जो शाम के सत्र में 108 जोड़े बैठने वाले हैं उन सभी जोड़ों को भी इस दोपहर के प्रसादी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। सभी यहाँ पर पधारें और प्रसाद प्राप्त करें, ऐसा हमारा आग्रह निवेदन है। दोपहर भोजन के पश्चात प्रसादी के पश्चात शाम 5:31 पर श्री सुंदरकांड पाठ का 1080वां पाठ जो 10वीं माला को पूर्णता प्राप्त करेगा प्रारंभ हो जाएगा। कल चतुर्थी है, मातृशक्ति के द्वारा जो है चौथ का व्रत किया जाता है और हिंदू संस्कृति में चौथ के व्रत की विशिष्ट महत्ता है। तो मातृशक्ति के लिए इस चतुर्थी के अवसर पर यह प्रयास होगा कि हम 5:30 बजे से पाठ प्रारंभ करके 8 बजे पाठ को विश्राम दे दें। यहाँ समिति के द्वारा, आयोजन समिति के द्वारा चूरमा, तिलकुट्टा एवं चंद्रदेव के पूजन के लिए अर्घ की व्यवस्था समिति के द्वारा रखी गई है। सभी यहाँ माताएं जो है चंद्रदेव का दर्शन कर सकती हैं, उसकी व्यवस्था समिति ने की है। इसके लिए जो है हम समिति की ओर से सभी मातृशक्ति से निवेदन करेंगे कि वे चतुर्थी होने के उपवास होने के साथ ही श्री सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ऐसा ना हो कि हम जो है उपवास है, व्रत है या चंद्रदेव का पूजन कैसे करेंगे यह विचार करके हम पाठ में ना बैठ पाएं। कल के ही प्रसंग में श्री गणपति जी
और श्री हनुमान जी की क्या समानता है, इस पर हमने जो है उनके विवेचना को सुना है। तो सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं समिति की ओर से, और बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं संस्कारधानी नगरी की ओर से भरत भाई एवं उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो गरबा तो करने का ही है। तो एक भजन जो हिंदी वाला है वो गरबे में कर देते हैं। गुजराती को लो, गुजराती लो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गरबे में आप गाएंगे वो। तो हनुमान चालीसा गरबे में करेंगे, एक भजन गरबे में करेंगे और बाद में आरती। मैं आरएसएस के स्कूल में विश्रादी टीचर की नौकरी मैंने की 18 साल। तो वो नियम उधर मेरे को सीखने को मिला है कि टाइम पे और कम